Hello friends, good morning and welcome to my YouTube channel. This is our day 12 class is going on. So let's begin today's session. These are my credentials. Question number 272. Crossing over occur during lactotine, zygotine, pachytine, diplotine. So answer C is correct here. Crossing over is the exchange of genetic material between homologous chromosomes that results in recombinant chromosome. And this stage of crossing over occurs in pachytine stage of prophase 1 of meiosis. तो जो ये stage है that is pachytine, in which crossing over of homologous chromosome taking place and this result in the formation of recombinant DNA. And ये जो stage पाई जाती है वो that is found in pachytine stage of prophase 1 of meiosis. So answer C is correct. Question number 273. In which of the following multiple epidermis is found in Amaranthus, Helianthus, Borhavia, Nerium? So answer D is correct. Epidermis क्या होती है? That is the outermost cellular layer of the plant body and generally it consists of a single layer of epidermal cells. But in some cases like xerophytes में, like if we talk about the xerophyte example, Nerium में क्या होता है? Multiple epidermis made up of many layers. This is the thick epidermal cells. यहाँ पर जो होती है thick epidermal cells present होते हैं and this helps in reducing the rate of transpiration and provide protection. ये transpiration के rate को कम करता है जिससे कि water evaporation कम होता है and it provide protection. So this is found in the Nerium. So answer D is correct here. Question number 274. The newly hatched tadpole breathes through its lungs, external gills, internal gills, all of the above. So answer B is correct. Tadpoles क्या होते हैं? Tadpoles is the larval stage of amphibian, particularly of frogs और toads की ये larval stage है. This is the larval stage of frog and toads and ये क्या करते हैं? This is resembles like fish. ये fish की तरह होते हैं. They are wholly aquatic. वो पानी में रहते हैं ज़्यादातर and they breathe through the external gills. इनके जो body पे tadpoles के जो larval stage है, tadpole is a larval stage of frog and toad and they have external gills that is useful for the respiration of the tadpole larvae. So answer B is correct. Question number 275. Virus in Latin means sweet small fluid poison. So answer D is correct. Virus का मतलब क्या होता है? Virus has been derived from the Latin word और Latin word में virus का meaning है to poison and other noxious substances. Virus जो होते हैं they are very small and infectious agent होते हैं and that replicate only inside the living cells of other organism. Their genetic material replicate inside the body of other animal or organism. So virus Latin means is to poison or poison. So answer D is correct here. Question number 276. The biological process in which both aerobes and anaerobes degrade organic matter. यहाँ anaerobes and aerobes means aerobic bacteria and anaerobic bacteria. The degrade organic matter is the process पूछा उन्होंने A manuring, B composting, C digesting and D nitrifying. So इसका आंसर है composting. Composting का मतलब क्या होता है? To make compost और composting is the decomposition of plant remains and other non-living materials to make compost and this substance is rich of nutrients and they are excellent for the soil. It is chiefly way to recycle waste. So it is done by different type of bacteria and both aerobics as well as anaerobic bacteria degrades the organic matter to forms the compost. So answer B is correct. Question number 277. Statement 1. Complex tissue is made up of more than one type of cells. Statement 2. Meristems are example of permanent tissue. ऑप्शन ए में पूछा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट.
And B, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. And fourth option is both statements 1 and 2 are incorrect. So answer A is correct. इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. सो इट इज करेक्ट. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. एंड सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, मेरिस्टेम आर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज जो मेरिस्टेम्स होते हैं, दिस इज द टिश्यू इन मोस्ट प्लांट कंटेनिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं दे, और दे आर फाउंड इन द जोन ऑफ प्लांट वेयर ग्रोथ टेक्स प्लेस. ये कंटिन्यूसली जो मेरिस्टेम्स जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं, एंड दे फाउंड इन जोन ऑफ प्लांट वेयर ग्रोथ टेक्स प्लेस. दे आर नॉट परमानेंट टिश्यू. सो आंसर ए इज करेक्ट. दैट मीन मेरिस्टेम आर एग्जाम्पल ऑफ permanent tissue is incorrect statement. They are not permanent. Question number 278. The cuticle is absent in A, leaf, B, stem, C, root, D, fruit. So answer D, C is correct. Root में cuticles are absent. Why? ये जो एपिडर्मिस होती है ऑफ द स्टेम एंड लीफ सेल्स, जो हमारे लीफ और स्टेम सेल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, एक थिन कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल. एंड दिस इज मेड अप ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन. ये क्यूटीन की बनी होती है क्यूटिकल, जो आउटर कवरिंग होती है लीफ और स्टेम्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर. इट मीन, इसका मतलब ये क्यों होती है, वाई इट इज बिकॉज टू प्रिवेंट एक्सेसिव इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम, leaf or fruit, but it is not found in the root. Root epidermis पे cuticles are absent. So answer C is correct here. Now question number 279. Intercalary meristems are found in nodes, lateral buds, terminal buds, D internodes. So answer D is correct. Meristems जो होते हैं they are classified by their location in the plant. एक तो होता है apical. Apical means that is located at the root and shoot tips. और जो इंटरकैलरी होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स पे होते हैं, और स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेसेस एट विच लीव्स अटैच, लीफ बेसिस पे होते हैं. सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स. ये इंटरनोड्स पे होते हैं. सो आंसर डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 280. Which of the following pair is correctly matched? Vitamin A, scurvy. No, scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. And vitamin B, rickets. No, rickets is caused by the deficiency of vitamin D. Vitamin C, night blindness. No, night blindness जो होती है वो vitamin A की कमी से होती है. And vitamin E, reproduction. So answer D is correct. जो vitamin A होता है that is fat soluble vitamin, and that is essential for the important they are essential for maintaining the proper health of reproductive system, and without vitamin A body cannot reproduce. It is also essential during the pregnancy and is needed for the proper health and development of fetus. vitamin A की कमी से reproduction में health issues हो जाते हैं. So vitamin E is very much important for the reproduction process. So answer D is correctly matched. Question number 281. Major pesticidal properties are present in Jatropha, Castor, Pungamia, Jamun. So answer A and C. More than 2 options are correct here. Jatropha carcass is known for its insecticidal, pesticidal and fungicidal properties. इसमें तीनों properties होती है, insecticidal, pesticidal and fungicidal property contained by Jatropha. If we talk about Pungamia, then it show pesticidal property against nematodes. ये जो Pungamia plant है that shows pesticidal property against nematodes. Nematodes के against ये show करता है pesticidal property. So answer A and C both are correct. Question number 282. Which of the following statement is true? Animals worry about raising their families? No. Animal make several feeding trips in a day. Animal often behave sensibly. Animal do not show meaning of brotherhood.
animal do not know meaning of brotherhood. So answer B is correct. Animal makes several feeding trips in a day. Big birds and antelopes feed several time a day. And ये A, C, D are wrong statements. So B is correct. Question number 283. Green blocks are referred to: A, green cover, green ministry, C, biobricks, D, probiotic curd. So answer is green blocks are also called as biobricks. जो green blocks हैं that are comprised of blocks throughout the neighborhood that pledge to be greener by working together to improve quality of life, cleanliness and beautify their neighborhood. So they are also known as biobricks. So answer C is correct here. Now question number 284. 2,4-D is used as weedicide, vitamin, fertilizer, insecticide. So answer A is correct. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid or 2,4-D is a organic compound and that act as a herbicide or weedicide by killing the weeds and uncontrolled growth of the weeds. So answer A is correct. It acts as a weedicide or herbicides and it kills the weeds of the plant, and this is an organic compound. So answer A is correct. Now question number 285. Vidal test is used for diagnosis of salmonellosis, malaria, cholera, typhoid. So answer D is correct. Vidal test is used for the detection of typhoid. Now question number 286. What accumulates in the muscles after continuous strength physical exercise as a result of temporary anaerobic respiration that cause a muscular fatigue? A, ATP, B, lactic acid, C, ethyl alcohol and D, carbon dioxide. सो फ्रेंड्स, जब एनारोबिक रिएक्शन होती है बॉडी में, एनारोबिक कंडीशन कब होती है? व्हेन यू डजंट गेट एनफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. व्हाट हैपेंस? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो होता है दैट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड टू प्रोड्यूस ATP. ATP सिंथेसिस के लिए जो ग्लूकोज होता है दैट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड सो दैट ATP सिंथेसिस कैन अकर. बट लैक्टिक एसिड जब बनता है एनारोबिक कंडीशंस में, सो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा. जब एक्यूमुलेट हो जाता है देन दिस कॉजेज द मसल फैटिक की कंडीशन शुरू हो जाती है बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से. So answer B is correct. Question number 287. Thalassemia is an example of A, deletion mutation, B, point mutation, C, silent mutation, D, frame shift mutation. So answer है frame shift mutation. Thalassemia is an example of frame shift mutation. तो thalassemia है क्या? Thalassemia is an inherited blood disorder. ये एक blood disorder है in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. ये जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है दैट इज प्रेजेंट इन RBC विच मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म. ये थैलेसीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है एंड हीमोग्लोबिन ये यूज़ किस लिए होता है? दैट कैरीज द ऑक्सीजन इन अवर ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम करता है. अब थैलेसीमिया क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे जो DNA कोडोन्स होते हैं अंदर बॉडी में, जो थैलेसीमिया वाला जीन है उसमें डिलीशन और इंसर्शन ऑफ 1 और 2 बेस पेयर, 1 और 2 कोडोन का इंसर्शन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा कोड शिफ्ट हो जाता है. तो जो ये शिफ्ट हुआ तो इस वजह से इसको कहते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. हमारे DNA कोडोन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है एंड दिस इज अवर थैलेसीमिया जीन. जो थैलेसीमिया जीन का कोडोन है दैट फ्रेम इज शिफ्टेड बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ 1 और 2 बेस पेयर और डिलीशन ऑफ, या तो उसमें इंसर्शन होगा बेस पेयर का या उसमें डिलीशन होगा. तो इन दोनों की वजह से फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से जो कोडोन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है जीन के अंदर
वो आ जाती है, क्या बोल सकते हैं हम उसको, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, दैट्स वाई, एंड दिस म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और दिस म्यूटेशन की वजह से थैलेसीमिया होता है, और दिस इज इनहेरिटेबल डिजीज, ये हेरिटेबल डिजीज है, एंड दिस इज अकर बाय द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. सो आंसर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 288. यूट्रॉफिकेशन of a water body enhance organic matter production, B biological oxygen demand, C both and B, A and B, and neither A or nor B. So answer C is correct. इसमें क्या होता है, excessive richness of nutrient in a lake or other water body, इसके जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो स्टोर हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, दैट मीन ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होती है, एज वेल एज अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होगी तो सीधी सी बात है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी. सो सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 289. व्हाट इज फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड? मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, डी ट्रक फार्मिंग. सो आंसर ए इज करेक्ट. इट इज ए मिक्स्ड फार्मिंग. व्हेन ऑन ए फार्म अलोंग विद क्रॉप प्रोडक्शन, some other agriculture based practices like poultry, dairy farming और bee keeping, अगर ये करते हैं हम, अगर क्रॉप के साथ साथ हम एग्रीकल्चर भी करते, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम डेयरी प्रोडक्शन करते हैं, बी कीपिंग करते हैं या पोल्ट्री करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग. सो आंसर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 290. The plant from which cocoa and chocolate are obtained is A herb, B shrub, C small trees, डी वेरी बिग ट्री. सो आंसर सी इज करेक्ट. जो कोकोआ के प्लांट होते हैं दैट इज नोन एज थियोब्रोमा कोकोआ विच आर वेरी स्मॉल ट्रीज. सो आंसर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 291. द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज ए यीस्ट, बी एसिटाबुलरिया, सी एसिटोबैक्टर, डी अमीबा. सो आंसर डी इज करेक्ट हेयर. इट इज फाउंड इन द मरियाना ट्रेंच. It is found in Mariana Trench, which is in our Pacific Ocean, and its name is giant amoeba, and they can grow up to 4 inches in length. So answer D is correct. Question number 292. Foramen magnum is an aperture found in A ear, B lung, C girdle, and D skull. So answer D is correct. This is the hole which is found at the base of the skull through which the spinal cord passes. So answer D is correct. Foramen magnum is it is a very big hole that is found at the base of skull, and यहाँ से spinal cord pass होती है. Question number 293. Kelp is a sulfide mineral of iron, partially decomposed vegetation, seaweed rich in iodine content, D an aluminium silicate mineral. So answer C is correct. जो कैल्प है दैट आर लार्ज ब्राउन एल्गी सीवीड्स हैं एंड दे आर रिच इन आयोडीन कंटेंट. सो आंसर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 294. बार बॉडी इज फाउंड इन स्पर्म, सर्टोली सेल्स, फीमेल सोमेटिक सेल्स, मेल सोमेटिक सेल्स. सो आंसर सी इज करेक्ट. बार बॉडी जो होती है दैट इज फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ सोमेटिक सेल्स ऑफ फीमेल मैमल. इट इज डिस्कवर्ड बाय मुरे बार, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बार बॉडी. Question number 295. One of the best solution to get rid of non-biodegradable waste is A burning, B dumping, C burying, D recycling. So the best way of getting rid of non-biodegradable waste such as plastics and polythenes is by recycling them. अगर हम उनको बर्न करते हैं देन दे विल रिलीज सम गैसेज दैट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन हेल्थ, एंड डंपिंग एंड बरिंग इज़ नॉट गुड ऑप्शन. सो आंसर डी इज़ करेक्ट. रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करके हम उसका दैट इज़ बेस्ट सोल्यूशन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 296. वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय फंगस, bacteria, worms, animals. So answer C is correct. Vermicomposting is the process of using worms and microorganisms to turn kitchen waste into black earthy smelling nutrient rich humus. और humus क्या होता है? That is nutrient rich organic fertilizer है that can be used
in the soil, and so that we can increase its soil health. So answer C is correct. Vermicomposting is done by the worms. Question number 297. If waste materials contaminate the source of drinking water, which of the following disease will spread? A. Scurvy. No, scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. Typhoid. Yes, typhoid is correct answer. Malaria. Malaria is caused by the female Anopheles mosquito, and anemia is a deficiency of iron. So only typhoid is left here. This is caused by the ingestion of contaminated food and water. So answer B is correct. Question number 298. Which vein brings clean blood from lungs into heart? A. Renal vein. B. Pulmonary vein. C. Vena cava. D. Hepatic vein. So answer D is correct. Pulmonary vein जो होती है, that is vein that delivers the clean oxygenated blood from the lungs to the heart, and it brings oxygenated rich blood to the left atrium. ये जो हमारे हार्ट का लेफ्ट एट्रियम होता है, इसमें ये क्लीन ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन. Question number 299. Leaving agriculture land uncultivated for some year is known as intensive farming, fallowing, shifted cultivation, and subsistence farming. So answer B is correct. Fallow का मतलब होता है leave land for a period of time. इसमें क्या होता है कि जो लैंड में हम उसके बाद प्लॉगिंग कर देते हैं लैंड की, और उसको 2-3 सीजन्स के लिए उसमें हम कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करते. दिस इज नोन एज फैलोइंग. सो आंसर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 300. मूवमेंट ऑफ हेयर्स इन ड्रोसेरा इज रेफर्ड एज हेलियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक. तो ड्रोसेरा क्या होता है? ड्रोसेरा इज ए कॉमनली नोन sundew is one of the largest genera of carnivorous plant. ये carnivorous plant है. and bending of जो sundew plant और drosera plant की जो bending होती है glandular hairs की, that is known as thigmotrophism. The movement of hairs is known as thigmotrophism, and it is present in insecticidal plants. तो drosera is a insecticidal. It is a carnivore plant. So friends, we are stopping our video here, and we will continue our left questions in next video. So thank you friends.